Hey, do you know what is the best thing I like about India? That this country is full of culture and art. Every state has its own kind of art which explains its culture, which is really a beautiful thing. Hello and welcome to my channel. My name is Dipanshu and I create DIY videos related to fashion, jewelry, accessories and sometimes cartoons. And in this video, I'm going to talk about Kerala Mural painting. These paintings are traditionally made in Kerala, and I just thought that this will be a really beautiful idea to share this kind of traditional painting with you so that you can get to know more about the art forms of our country. So without wasting my time, let's just go and watch how I made this painting, and between that I have tried to provide you some more information about what kind of painting is this, how it's being made. Basically I have tried to provide more information. So without wasting much time, let's just go and watch this video. So सबसे पहले I'm going to talk about if you want to make this painting, what minimum things you will require. As you can see in video, I have used a Camel canvas of size 8x10. You can use whatever size you want to, along with dome stationery. Kerala painting in which you can see that there is a peacock, very beautiful peacock actually. So you will need to sketch a small design of your choice on canvas first of all, because after that you can do a coloring. You can't do a coloring straight on canvas like that for Kerala painting. So coming back to my painting, as you can see, this is the final sketch look which will going to look, and अब इस पे मैं coloring करना शुरू करूँगी. So coloring के लिए मैं Fevicryl के Aclyric color use करूँगी along with brush, round brush and water. जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने सबसे पहले ब्लू कलर लिया है, बिकॉज जो पीकॉक है उसकी बॉडी हम ब्लू कलर की करने वाले हैं, जिससे क्योंकि मैक्सिमम पोर्शन कवर करती है हमारी पेंटिंग की. तो मैंने उसमें ब्लू कलर यूज़ किया. उसमें थोड़ा सा व्हाइट मिक्स करूँगी ताकि थोड़ा सा लाइटर शेड आ जाए ब्लू का मेरे पास, और फिर मैं उसकी बॉडी पे उस ब्लू कलर को पेंट करना शुरू करूँगी. Above that, I would like to give you one more small tip about acrylic colors कि जब भी हम acrylic colors यूज़ करें तो बहुत जल्दी उसको यूज़ करें, क्योंकि वो बहुत जल्दी सूख जाता है और वो मिक्स नहीं हो सकता है. सो आप जब भी acrylic color यूज़ कर रहे हो इस चीज़ पर थोड़ा ध्यान रखें. Time to talk about Kerala Mural Painting. See, केरला मुरल पेंटिंग जो है केरला में 9th सेंचुरी से 15th सेंचुरी तक बनाई गई है, जो कि बेसिकली जो गुफाओं की दीवारें होती हैं और कमरों की दीवारें, छतें होती हैं, उसके ऊपर बनाई जाती है. बेसिकली यू कैन कॉल इट अ वॉल आर्ट बेसिकली, जिसमें बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट कलर्स यूज किए जाते थे टू मेक इट लुक मोर ब्यूटीफुल एंड उसकी लाइफ जो है और इंक्रीज हो जाए. सम मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट केरला मुरल पेंटिंग विद यू. तो ये जो पेंटिंग है ये बेसिकली दीवार पे इससे की जाती थी क्योंकि उस टाइम के जो आर्टिस्ट थे उनके पास कैनवस या पेपर, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं होता था ड्रॉ करने के लिए, तो उन्होंने दीवार को परफेक्ट कैनवस समझा और उसको उन्होंने कहते हैं पेंटिंग करना शुरू किया. दूसरी चीज़ ये है कि बहुत इंटरेस्टिंग कि जो इसके कलर्स थे, क्योंकि उस टाइम पे इतनी ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं थे हमारे पास, तो इसके जो कलर्स थे वो बहुत नेचुरल तरीके से वो लोग पेड़ों से, फलों से, सब्जियों से निकाल के उनको यूज़ करते थे, और ब्रशेस भी ऐसे ही पेड़ों की पत्तियों से बनाए जाते थे. तो उस तरीके से इन पेंटिंग्स को बनाया जाता था. प्लस इनको मंदिरों में और घरों में ज़्यादातर भगवान की फोटोज होती थी जिसको बनाया जाता था, ताकि
भगवान के बारे में, भगवान की तरफ और ज़्यादा बता सकें, तो मंदिरों की खूबसूरती बढ़ सके। बल्कि आप इनकी खूबसूरती का अंदाज़ा इसी चीज़ से लगा सकते हैं कि इनको आज भी राजस्थान की ब्यूटीफुल पेंटिंग्स के साथ कंपेयर किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको पिछले सेगमेंट में बताया कि केरला मुरल पेंटिंग जो होती है वो पुराने तरीकों से बनाई गई, उसमें बहुत ही ज़्यादा नेचुरल कलर्स यूज किए गए और कहते हैं मंदिरों में उसकी सौंदर्यकरण इतना ज़्यादा था कि लोग बाहर भी देखने आते थे मेरे गाँव से। तो ये कुछ उन बहुत ही ट्रेडिशनल पेंटिंग में से हमारी कंट्री की जो आज भी जीवित हैं और लोग उन्हें आज भी प्रेज करते हैं, और जिस तरीके से बना के रखी गई, बनाई गई, वो एक स्पेसिफिक रीज़न है कि आज तक ये बची हुई है और लोग उनको देख रहे हैं और बना रहे हैं, और जैसे कि मैं अपना शेयर कर दूँ और शेयर करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम पार्ट जो है पेंटिंग का वो कंप्लीट हो चुका है। मतलब बड़े पोर्शंस जो थे वो हम कलर कर चुके हैं, छोटी छोटी से डिटेल्स उसके अंदर बची है, जिसके लिए मैं ग्रीन, येलो, रेड काइंड ऑफ प्राइमरी कलर्स को, और क्योंकि ब्राइट होते हैं इसलिए उनको यूज करूंगी और उनको फिल अप करूंगी। वन मोर इम्पॉर्टेंट टिप आई वांट टू शेयर विद यू इन दिस, जब भी आप कैनवस पेंटिंग कर रहे हो, बल्कि कोई भी पेंटिंग कर रहे हो, ऑलवेज कीप अ स्मॉल पीस ऑफ टिश्यू विद यू, जो कि आपके हाथ के नीचे रखा रहे, ताकि जब आपका हाथ मूवमेंट करे तो जो नीचे कलर हुआ वो स्मज ना हो, प्लस आपके हाथ के स्वेट या कुछ भी गंदगी शीट पे ना लगे, शीट खराब ना हो।
after completing the design of my painting, I am going to do the background, for which I have chosen a yellow color. येलो कलर इसलिए चूज किया है क्योंकि जो पीकॉक की पेंटिंग है वो ब्लू कलर की है, मतलब मैक्सिमम उसमें ब्लू कलर यूज किया और येलो और ब्लू कॉम्बिनेशन ब्लू कलर की पेंटिंग और उभारे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट उसके ऊपर येलो कलर के ऊपर मैं सिलेक्टेड जगहों पे प्योर एक्लेरिक रेड कलर डैप करूंगी और उससे वाटर से स्प्रेड करूंगी विद द हेल्प ऑफ ब्रश। हमारा बैकग्राउंड का कलर जो है वो सूख चुका है, हमारी पेंटिंग का कलर सूख चुका है और अब एक लास्ट और फाइनल चीज रह गई है इस पेंटिंग को कंप्लीट करने के लिए, वो है इस पूरी पेंटिंग की आउटलाइन। ट्रेडिशनली इस पेंटिंग की आउटलाइन जो है वो ब्लैक कलर से होती है, बहुत ही बारीक ब्रश से होती है, बट यहाँ पर मैं उस ब्लैक ब्रश की जगह ब्लैक मार्कर से पूरी पेंटिंग को आउटलाइन करने वाली हूँ। So after completing this painting, this is how my painting will look like, and I hope you will going to practice one soon. So I hope you like this video and you will going to try this at your home in your free time. Plus, did you like the information I provide you about this traditional Kerala mural painting? If yes, please let me know in the comment section below, because if you like such traditional paintings, I am going to share more information and more such paintings with you in future. And don't forget to subscribe to my channel for more creative updates. So see you until next time. Tata, bye bye.